Hello friends, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope you all are fine, right? So today's topic is gonna be really interesting but important. Okay, so please इस वीडियो को पूरा देखिएगा. अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा. So इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो आप इसको पूरा देखिएगा. Yesterday I uploaded one video regarding the chapter which is photosynthesis in higher plants, that is related to the class 11. Now in this section we are going to study about the light reactions. कल हमने किया था that photosynthesis, right? That is the process of making food that occurs where inside the leaf. Which part of the leaf? Especially the chloroplast, because chlorophyll as a pigment plays very important role in photosynthesis. वो कहाँ पर होता है? Chloroplast में होता है. और वो जो chloroplast है, that plays finally the important role in all these reactions for photosynthesis. Now then I told you something about light reactions and dark reactions. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लाइट रिएक्शन को. उसमें क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है, वो होता कहाँ है, एवरीथिंग वी गोना स्टडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक्चुअली हमको लगता है दैट फोटोसिंथेसिस इज वेरी मच इजी और सिंपल प्रोसेस, बट इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट. इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कॉम्प्लेक्सिसिटी. नाउ सी हियर आई हैव written in flowchart form so that you will be able to understand more easily. All right, light reaction is also known as photochemical phase. All right, photo means related to light, so the light reaction which requires actually the light which is provided by the sun, the ultimate source. All right, light energy further includes these four subphases. First is light absorption. Light is absorbed by the chlorophyll pigments. After that water splitting is there. I will tell you what is water splitting, आगे हम पढ़ेंगे. And finally oxygen is produced during process of photosynthesis. So light reaction में ही oxygen release होता है. When water splitting occurs, in that reaction oxygen is produced. Alright, तो वो कैसे होता है वो भी हम करेंगे. And finally formation of high energy intermediates. These are some structures which are really important just for the sake of energy. I told you that these are the energy boosters. So what is that? ATP and NADPH. So these are also produced in this light reaction. Now the question is, where does this light reaction takes place? What is the actual organ used? So the actual organ used is thylakoid. अब आप बोलोगे अभी thylakoid क्या चीज़ है? हमने कल क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम किया था, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. वेयर द ग्रेना वॉज देयर, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लैमेले, एवरीथिंग वॉज देयर, एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हेयर वन थिंग विच इज़ thylakoid. दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ light reactions. All right, you can see here these are the piled structures. जो एक पाइल बन जाती है, जैसे आप बुक्स रखते हो के ऊपर वो एक पाइल बन जाती है, दैट पाइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रेना, राइट. बट इन दिस पाइल वन सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर ओनली, आप अगर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लोगे, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज thylakoid. येस, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड डाउन. एंड वाइल जब ये एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा एक पाइल फॉर्म बन जाता है, टुगेदर वी कॉल इट ग्रेना. सो दिस इज द thylakoid एक्चुअल. हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ thylakoid इन enlarged व्यू. एक thylakoid लिया हमने, थोड़ा उसका साइज बड़ा करके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर. thylakoid, outer, this is actually the membrane which is called as thylakoid membrane, and the inner hollow cavity of the thylakoid is called as lumen. Alright, अगर हम इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे thylakoid का, this membrane, we can say that is the exact site of light reactions. So आपको कई बार नीट के एग्जाम में भी आ जाता है, what is the exact site of light reactions? So thylakoid's membrane. So this is about the thylakoid. Now the question is, what are the components present in the thylakoid? So thylakoid contains actually the important thing which is photosystem. Yes, photosystem. अब ये photosystem क्या है?
photosystem is a complex structure which is further divided into two parts. मतलब जो photosynthesis है, photosystem है, उसके further वो क्या क्या होता है उसमें, it contains two things. What are those two things? First is LHC. LHC means LHC is light harvesting complex. Okay, I will tell you this. And the second is core complex. All right. Now, what is light harvesting complex and core complex? To study these two things, I have made a diagram here. You can easily see in this diagram the center of this is actually the diagram for light harvesting complex. Okay, अब इस complex में क्या होता है? We have two parts. This is actually the light harvesting complex, round structures. What are these round structures actually? These are nothing but chlorophyll molecules. Okay, chlorophyll molecules हैं, but keep this thing in mind. These chlorophyll molecules can be chlorophyll B or other pigments, but not chlorophyll A. Chlorophyll A नहीं होगा, बाकी सभी होंगे. All right. These can be 40 to 60 molecules. Okay, other than chlorophyll A. Now, अब chlorophyll A आपने कल किया था, that is the main pigment responsible for light reaction. So वो कहाँ पर है? So वो present है यहाँ पर. Yes, the center structure is called as reaction center. This is really important, okay, from the light reaction point of view, and this is actually chlorophyll A. Yes, only a single molecule is present here. एक ही molecule है chlorophyll A का, which is called as reaction center. All right. Now, what happens actually here? In this reaction center, the pigment of chlorophyll, okay, that can be two types. What is that? The pigment can be P700 और P680. अब ये नंबर का क्या फंडा है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी. ओके, सो या तो वो पिगमेंट P700 हो सकता है या P680 हो सकता है. ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद द फोटो सिस्टम. अब यहाँ पर होता क्या है, काम क्या हो रहा है, आपको पता है सन है, राइट. सन की एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, जो लाइट एनर्जी आती है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही है आपके क्लास 11 में, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स. ओके, लाइट पॉकेट्स. ओके, सो दोज फोटोन्स, और सिंपल अगर आपने समझना है तो आप सिंपल याद रखिए लाइट रेज. ओके, लाइट रेज विच आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स दैट आर फर्स्ट captured by the light harvesting system which is also called as antennae. एंटीने होते हैं ना किसी चीज़ के सिग्नल कैच करने के लिए. ओके, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं अपना फर्दर थिंग. तो वही चीज़ है यहाँ पर. दीज आर दी एंटीने और यू कैन से दी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अदर देन क्लोरोफिल ए. दीज लाइट photons are captured or collected or absorbed, okay, by these, and you can see here I have drawn the line. Then these chlorophyll molecules transfer the light energy to this, then this, then this, and finally where to reaction center. Okay, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो भी whenever any light photon comes or strikes the atom, what happens? Its electron, आपको पता है एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, right? Its electron gets excited and that electron shifts to the higher orbit. You know, the atom further consists of so many orbits, okay, depending upon the size of the atom. Okay, so यहाँ पर भी वही चीज़ है, chemistry and bio together, all right. So what happens here, when light photon reaches here, the molecule of the chlorophyll A reaction center, it gets excited और इसका जो electron है that gets excited. Okay, वो क्या हो जाता है, it shifts to the higher लेवल और हायर ऑर्बिट. दिस इज़ दी एक्चुअली, क्योंकि आपने क्या कर रहे हैं, आप फूड बना रहे हैं, फूड बनाने के लिए पहले लाइट तो एब्जॉर्ब होगा ना, पूरा सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसका भी एक पूरा सिस्टम है कि किस तरह से वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा. तो यूजुअली लाइट इज एब्जॉर्ब एंड इलेक्ट्रॉन इज देन एक्साइटेड एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ चेन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस. ओके, नाउ दिस P700 एंड P680 जो मैंने आपको भी बताया, दीज आर नथिंग बट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. ओके, अब आप देखिए, अब आप ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज दिस P700 680, दीज आर एक्चुअली द फोटो सिस्टम, राइट. फोटो सिस्टम इज एक्चुअली टू टाइप्स, PS1, PS2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, PS1 एंड PS2. PS1 is chlorophyll A, PS2 is again chlorophyll A, but why we call this PS1 P700? Actually जो मैंने यहाँ पर P700 लिखा है, this is called as PS1.
और जो P680 है वो PS2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ओके। दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। अब हम इसको PS1 क्यों कहते हैं और इसको P700 क्यों कहते हैं? एक्चुअली द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन सेंटर, ये क्या करता है, आपको मैंने कल बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, एक वेवलेंथ होता है, ओके। एवरी मॉलिक्यूल जो होता है वो इट एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, ओके। कुछ 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड रीजन, वो सब मैंने आपको कल बताया था, ऑलराइट। सो हियर व्हाट हैपन्स, दिस क्लोरोफिल ए absorbs the wavelength of 700 nanometer, alright, जो विबग्योर है, visible light है. That's why it is called as P700, okay. That means P700 means the pigment or the chlorophyll A which absorbs the wavelength, light wavelength of 700 nanometer, that is called as P700, okay. I think now you are clear about this thing. And what is PS2? PS2 is P680 as the chlorophyll A which absorbs the wavelength of 680 nanometers, okay. So this is the difference between P700 P680. इसका difference भी important है, especially from examination point of view, differentiate between PS1 PS2 like that, okay. Friends, now comes the most important topic for today, okay, that is electron transport chain. Electron transport, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका light harvesting complex है, okay, light is absorbed and then electron gets excited, and what happens to that electron, okay, that electron which gets excited is transferred, okay, through an intermediate chain, okay, where one molecule accepts the electron, okay, and then finally it transfers to the other, okay. एक intermediate chain है and that together forms electron transport chain. Actually मेरे पास पेज कम पड़ रहा है तो मैंने दूसरा पेज यूज़ किया है इसमें, just to continue this chart, alright. Now you can see here it's not given in your textbook, so please you all are requested to note it down. Now this electron transport chain actually having two phases, right? PS2, अब आप ये मत कंफ्यूज हो कि PS1 पहले आए PS2 के, PS2 पहले आता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और उसकी ज़्यादा है, you know, wavelength travels from increasing order obviously, so that's why PS2 PS1, okay. So what happens here, same thing, reaction center chlorophyll A, okay, all these are the antennae, other chlorophyll molecules. सन आप इधर बना दो उधर बना दो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. सन मैंने यहाँ इजीली बना दे ताकि दोनों तरफ को इजी रहे, ओके. सन light in the form of photon is captured by the antenna and finally it reaches to the reaction center, okay. After this what happens, I told you that electron gets excited, okay, like this P680 excited chlorophyll molecule. What happens now, it gives that electron to the one acceptor. यहाँ पर एक acceptor होता है, एक आप कह सकते हो एक चेन में, जैसे हम एक चेन बना दें इन अ क्यू. आप किसी को कुछ पास करना चाहते हो, जैसे आप कोई पेपर पास करना चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड को दोगे, वो आपके दूसरे फ्रेंड को देगा, लाइक दैट, ओके. सो आप इस तरह से इसको समझिए. सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ओके. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस होल चेन, ना देयर इज वन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस गोइंग ऑन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके. In class 10 you studied that oxidation is what? Loss of electrons, and reduction is gain, okay. So when it is giving this electron to the other acceptor, that means loss of electron occurring. So here oxidation is taking place, whereas here it is gaining the electron, that's why here reduction is taking place. वैसे ही जब ये इसको देगा तो ये loss हो रहा है, oxidation reduction, that means oxidation reduction takes place in a continuous form, alright. Now this acceptor again gives the electron to this QA. आपको ऐसे ही याद करना है, okay. You have to learn like that only, कुछ shortcut follow नहीं करना है, okay. QA, and then QA electron gives to the QB. All these are the quinones, okay. These are the intermediates. After that QB give that electron to plastoquinone pool, okay. This is another intermediate, and from here electron is transferred to cytochrome complex, all right. Cytochrome complex is another intermediate. Just you learn the names properly only, okay. Don't get confused with such type of bigger names. And finally the cytochrome complex
ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू द प्लास्टोसाइनिन. ओके, सभी क्या है ये प्रोटीन के इंटरमीडिएट्स हैं, बस आप ये समझ लो प्रोटीन होता है इनमें. दिस एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट जस्ट टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन. अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना कहाँ है, फाइनली दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ टू रीच हेयर द PS1. ओके, दैट्स वाई वी हैव एन इंटरमीडिएट. ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं लेता है, एक चेन होती है. एंड नाउ सी, from here to here so many intermediates are coming together, okay, which are transferring the electron. So this pool is actually called as electron transport chain. It's a chain formed here. Okay, one thing here important to be noted down is that in this electron chain now from here to plastocyanin, what is happening, it provides energy. This chain provides energy to form ATP. यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनता है, ATP बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो ATP इज द एनर्जी बूस्टर. ओके, और आपको मैंने अभी बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH. ऑलराइट, तो जो ATP है, ATP इज फॉर्मिंग इन दिस चेन. ओके, एंड यू नो ATP इज फॉर्म्ड व्हेन di means 2-phosphate adenosine diphosphate combines with one inorganic phosphate. जब दो phosphate एक phosphate से combine करेंगे, obviously 3 phosphates are being formed, so adenosine triphosphate ATP is being formed in this chain. All right, okay, now we move on to the next PS1. Now this is PS1 P700. This is again reaction center antenna, वही सब कुछ. Okay, now what happens again, the light excites this whole complex. All right, light इधर जा रही है and then antenna gets excited, absorbs light, finally reaches to the reaction center. Reaction center means chlorophyll A or P700. It gets excited, electron is shifted to this point. Okay, then what happens, the electron is further oxidized or loss of electron occurs, and it is this iron sulfur proteins then catch up that electron. That means these are reducing, यहाँ पर gain हो रहा है electron का. all right, and again that electron is transferred to ferredoxin. You just learn the names, these are all again intermediates having proteins, and ferredoxin further transfers the electron to NADP positive. This is again intermediate. And now see, this is the final step, NADP positive. Okay, when accepts the electron, all right, जब उसमें electron add हो जाता है, then it becomes NADPH. no positive sign now. Okay, because it was lacking. Positive sign का मतलब when some electrons are lacking inside. Okay, so when that fulfills the demand, so it becomes now NADPH. hydrogen is added here. All right, so this whole system is actually called as electron transport chain. As you can see, it looks like a Z scheme. Structure is Z की तरह लग रहा है ना, that's why we also call it Z scheme. Okay, so I think you all understood the thing. Or okay, now one more thing, अब आप एक question पूछ सकते हो. You can ask me one question that in this reaction, okay, one electron get excited, that transfers and passes on, and finally here and again that process taken place. Now what happens after NADPH, क्योंकि वो electron तो चला गया. okay, यहाँ पर उसने NADPH बना लिया, that's gone, but this cycle तो it's continuous. okay, this step तो it's continuous. तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आई टोल्ड यू इन लाइट रिएक्शन वाटर स्प्लिटिंग ऑल्सो देयर. जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना वाटर स्प्लिटिंग का. येस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट वाटर स्प्लिटिंग एक्चुअली अकर्स PS2. okay, what happens, water molecules, आपको पता है water molecules also play the role in photosynthesis, right? We are from atmosphere and from the plants, those are absorbed. Water actually divides, or you can say splits, टूट जाता है, break downs into 2 electrons, 2 hydrogens and 1 oxygen. all right, so these are those electrons which are actually transferring to this reaction center. अब एक बार इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो बाकी दूसरी बार कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स. फिर जब ये फिर से यूज़ हो जाएंगे, देन अगेन वाटर स्प्लिट करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत होते हैं प्लांट्स में. ओके, सो लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हियर. ओके, एंड यू कैन सी हियर इन दिस प्रोसेस व्हाट इज देयर, व्हाट इज फॉर्मिंग फाइनली द ऑक्सीजन. येस, यू नो इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट. सो वो ऑक्सीजन कहाँ बनती है, वो यहाँ पर बनती है ड्यूरिंग द वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस. This oxygen is being produced here. अभी food नहीं बना है, ग्लूकोज वगैरह नहीं बना है, that will be formed inside the stroma. okay, so this is all about the light reaction, because you know light reaction means absorption of light, and this process dark reaction में आप food की formation पढ़ोगे. okay, so this is about the light reaction. I hope you all understood this concept.
Okay, if you really liked my video, please subscribe my channel. Thank you so much.